Hello students, I am Sanjit Kumar Giri. This is my YouTube channel. If you see the next videos, then please subscribe my channel. Today I have discussed about transistor as a two-port network. ट्रांजिस्टर गोटे दीटा पोर्ट नेटवर्क भाव केमी कम कर विषय आज पढ़ा. In transistor amplifier, the alternating currents or voltages, that is also signals, are applied to a pair of input terminals known as input port. In this case, there are two ports. One is input ports and then other is output ports. दी प्रकार पोर्ट रही गोटे इनपुट पोर्ट कही परिबा गोटे आउटपुट पोर्ट कही परिबा. इनपुट पोर्ट रे मध्य दीटा टर्मिनल रही, आउटपुट पोर्ट रे मध्य दीटा टर्मिनल रही. सो आम कही परिबा सिग्नल्स आर अप्लाइड टू एन पेयर ऑफ इनपुट टर्मिनल्स. जदि सिग्नलटा इनपुट टर्मिनल रे अप्लाई करा जाए ताल ताको हम कहते इनपुट पोर्ट. जदि आम ट्रांजिस्टर द्वारा जदि एटा को एम्प्लीफाई करबा द्वारा ट्रांजिस्टर एक्ट एज एम्प्लीफायर एम्प्लीफाई करबा द्वारा ई सिग्नल टाको जो एम्प्लीफाइंग सिग्नल टा में पाइबा जोटा आउटपुट आम कहि परिबा जदि सेटा में आउटपुट टर्मिनल रे पाई परिबा त सेटा हम कहि परिबा आउटपुट पोर्ट. The amplified signal is obtained from a pair of output terminals known as output port of the transistor amplifier. Look at the figure. This is the black box. The left hand side of black box is input port. In this case, there are two input terminals. In similar case of in the right hand side of black box, this is the output port. This is also two signals, contain two signals. In this case, in the input port case, the current is I1, voltage is V1. In the output port, current is I2, voltage is V2. जदि आम ट्रांजिस्टर जो टर्मिनाल रही तार बिहेवियर विषय जदि आम जानापी चाहिए ताल आम ये चारिटा वेरिएबल द्वारा आम पाइपर. ये चारिटा वेरिएबल सब कौन कौन रही ना दीटा वोल्टेज आ दीटा करेंट. ताल आम कहीपर द टर्मिनाल बिहेवियर of transistor is determined by the four variables, and these variables are two signal voltage V1 and V2, and the currents are taken as a positive when they enter to the transistor and taken as a negative when they leave the transistor. If the current is जदि current transistor रू बाहरी जीव आगे प्रथमे जदि ट्रांजिस्टर भीतर को प्रवेश करिवो ताल ताको हमें पॉजिटिव भाव नबा आ जदि ट्रांजिस्टर बाहर जीव ताल हमें ताको नेगेटिव भाव नबा. The voltages are taken as a positive from upper part to lower terminal and taken as a negative from lower to upper terminal. Lower रू जते बळे upper को जीव सेते बळे हम ताको नेगेटिव नबा वोल्टेज को आ जते बळे upper रू lower को जीव सेते बळे ताको हमें पॉजिटिव नबा. तापर हम पढ़िबा इक्विवेलेंट सर्किट जो हाइब्रिड पैरामीटर्स रही. यही वेरिएबल्स मानक आम also parameters कहि परिबा. Look at the figure. We have already discussed. This is the black box. The left hand side of black box is input port. It contains two terminal. Current is I1, voltage is V1. In similar case of output case, the output port contains two terminal, and the current is I2, voltage is V2. So every linear circuit having an input port and also an output port can represent by a black box.
गोटे ब्लैक बॉक्स द्वारा इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट टाको प्रत्येक लिनियर सर्किट द्वारा आम रिप्रेजेंट करें जो चारिटा वेरिएबल कथा आम कही था गोटे हूँ इनपुट करेंट I1 गोटे आउटपुट करेंट I2 गोटे इनपुट वोल्टेज V1 आ गोटे आउटपुट वोल्टेज हूँ V2 so the four variables are input current I1 output current I2 input voltage V1 और output voltage V2 the currents are assumed to be already we are discussed about the currents are assumed to be positive if they are flow into the black box जदि current टा black box भीतर को flow करछि त हमें positive नहीं परिबा आ जदि black box रु बाहरी होछि ताले हम ताको negative नहीं परिबा से बोली जदि अपर लेयर को वोल्टेज ता अपर लेयर टा को हमें पॉजिटिव नबा और लेयर अपर को हमें नेगेटिव नबा so the input current I1 and the output voltage V2 are considered as independent variables so they hame current input current I1 this is the input current I1 our output voltage V2 टा को हमें independent variables भाव नबा किंतु input voltage आउ आउटपुट करेंट ये दुटा को आम डिपेंडेंट वेरिएबल नबा जोटा क्या ऊपर डिपेंड करिवो ना I1 आउ V2 ऊपर जदि डिपेंड करिवो ताले आम कहि परिबा द इनपुट करेंट I1 and the output voltage V2 are considered as independent variables but the input voltage V1 and the output current I2 are considered as dependent variables so जदि ए जो दीटा वोल्टेज रही गोटे V1 आ गोटे V2 आम बर्तमान इनपुट वोल्टेज V1 टा को डिपेंडेंट नेलु जोटा I1 आ V2 पर डिपेंड करे जदि I1 आ V2 पर डिपेंड करिवो त तार इक्वेशन टा को आम लिखि परिबा V1 इक्वल टू H11 into I1 plus H12 into V2 सिमिलर केस जदि आउटपुट करेंट I2 कथा आम लिखिबा त I2 इक्वल टू H21 into I1 plus S22 into V2 so ये जो H11 S12 S21 S22 ये मानु सब आम कांस्टेंट कोई परिबा जहा को मध्य हाइब्रिड पैरामीटर सब आम कोई परिबा ये जो चारिटा आम पैरामीटर्स हाइब्रिड पैरामीटर सब आम पाइलु से जो प्रथम पैरामीटर्सटा रही जार नाम H11 ये जो पैरामीटर्सटा यार डायमेंशन जहाँ इम्पिडेंस डायमेंशन से सो द पैरामीटर H11 हैज द डायमेंशन ऑफ इम्पिडेंस हमको जना अछि इम्पिडेंस यूनिट होछि ओम सो H11 रो यूनिट भी मध्य आमे ओम कहि परिबा सेही बली पैरामीटर S22 कथा जदि आमे कहिबा द डायमेंशन ऑफ admittance we know that admittance is the reciprocal of impedance ताले ओम इनवर्स कोई परिबा में यार यूनिट बा मो बोली कोई परिबा ताले कोई परिबा the parameter S22 has the dimension of admittance and it is measured in mho in similar case of H12 this is the H12 so the parameter H12 and S21 are the dimensionless and unitless ये जो दीटा पैरामीटर आम धरीचु H12 और S21 तार कौन से डायमेंशन नहीं कि यूनिट नहीं तो ये डायमेंशन ये पैरामीटर्स मान को आम कहि परिबा हाइब्रिड पैरामीटर्स so the hybrid equivalent circuit of a transistor is shown in the figure this is the figure एटा हाइब्रिड पैरामीटर्स मानन को नहीं जो सर्किट टा ट्रांजिस्टर तैयारी होइছে এই जो ट्रांजिस्टर टा को हमें এই सर्किट टा हमें लक्ष्य करबा so this is the input voltage V1
This is the input current I1. This is the hybrid parameter H11. This is the hybrid parameter H12. This is the output voltage V2. This is the H21 is the hybrid parameters. I1 is the current, input currents. In similar case, this is the output current I2, and this is the 1 by H22. H22 is also hybrid parameters. So look at figure. If V2 is 0, if the output voltage is 0, look at the first equation. If V2 is 0, then V1 equal to H11 into I1. So H11 equal to V1 by I1. The parameter H11 is the ratio of, this is the V1. V1 means input AC voltage. I1 means input AC current. So the ratio between भितर ना V1 और I1 रे जो ratio टा ताको आमे कहि परिबा H11 ताले आमे कहि परिबा the parameter H11 is the ratio of input AC voltage to the input AC current. Voltage by current टाको आमे जानिछु resistance एटाको मध्ये also कहि परिबा जेहेतु एटा इनपुट रहिछि तनो याको आमे also कहि परिबा input impedance. ताले आमे कहि परिबा the parameter H11 is the ratio of input AC voltage to the input AC current, and it is represent the input impedance with the output port short circuit. जदि आउटपुट पोर्टा शॉर्ट सर्किट हेइजिबो ता माने V2 टा 0 हेइजिबो. जदि V2 टा 0 हेइजिबो ताले आमे पाइबा H11 इक्वल टू V1 I1. सो जदि आउटपुट पोर्टा शॉर्ट सर्किट हेइजिबो सेतेबेले आमे H11 टा को आमे लिखि परिबा. इट इज डिनोटेड बाय HIE for the common emitter mode. Common emitter mode रे H11 को हमें लिखि परिबा HIE. कॉमन बेस मोड रे हमें ताको HIB कोइ परिबा. आ कॉमन कलेक्टर मोड रे H11 को हमें HIE कहबा. तापर हमें द्वितीय पैरामीटर्स पाखक जिबा जहाँ को हमें कहि परिबा H12. Look at if I1 equal to 0. जदि I1 टा 0 हे जिवो बर्तमान आम H12 बाहर करने चाहिए. सो जिते I1 टा 0 होता आम पाइबा V1 इक्वल टू H12 इंटू V2. सो H12 इक्वल टू आम पाइपर V1 by V2. सो this is the input AC voltage, this is the output AC voltage. ताले ए पैरामीटर कथा जदि आमे कहबा, this is the ratio between input AC voltage to the output AC voltage. ताले एटा को आमे कहि परिबा, this is the reverse voltage transfer ratio when the input port is open. जदि इनपुट पोर्टा ओपन रहिबो ताले से करंट फ्लो हबो नाही, तमने I1 टा 0 हबो. ताले एई जो नेक्स्ट पैरामीटर कथा हमें कहले जोटा होची H12 से जो पैरामीटर टाको एटा को हमें कॉमन एमिटर मोड रे, कॉमन बेस मोड रे आ कॉमन कलेक्टर मोड रे कोन कर लिखबा. इट इज डिनोटेड बाय HRE फॉर कॉमन एमिटर मोड, HRB for common base mode, and HRE for common collector, RC for the common collector mode.
but we also discussed this parameter is a unitless. So next parameter H12. Locate the figure. If we want to the value of H21, sorry, this writing is wrong. So look at the figure. If we want, look at the second equation. If we want the, or we determine the value of H21, then put V2 equal to 0. V2 equal to 0 means the output port is short circuit. That means I2 equal to H21 into I1. So implies that H21 equal to I2 by I1. So the parameters is the ratio of this. The I2 means output AC current. I1 means input AC current. So it is the ratio between output AC current to the input AC current. It is also known as output by input, means this is the forward current transfer ratio when output port is short circuit. So आम कौन लिखिपर H21 जो parameters रही तार कॉमन एमिटर मोड रे, कॉमन बेस मोड रे, कॉमन कलेक्टर मोड रे कौन सब सिंबल लिखिपर. So it is denoted by HFE. HFE means common emitter mode, HFV means common base mode, HFC means common collector mode. Then the last parameter is H22. Locate the second equation. If we calculate the value of H22, then put the value of I1 equal to 0. I1 equal to 0 means this circuit is the input port is open. So I2 equal to S22 into V2. So apply the V2 equal H22 equal to I2 by V2. I2 is the output AC current, V2 is the output AC voltage. So the ratio between output AC current to the output AC voltage, we get H22. So look at S22 equal to I2 by V2. It is also discussed. So it आम कही आउटपुट एडमिटेंस यहाँ केतबेले संभव ना जिते इनपुट पोर्टा ओपन रहीटा को आम जो पैरामीटर H2 टाक आम प्रत्येक मोड्रे कौन कौन सब लिखिपर ना कॉमन एमिटर मोड्रे आम लिखा HOE, HOB टा आम कॉमन बेस मोड लिखा आउ HOC टा आम कॉमन कलेक्टर मोड लिखिपर. यार यूनिट हूँ मोड. Then the next one is the hybrid equivalent circuit of single stage CE amplifier.